Hello, kids. A very good morning to all of you, kids. Today we are going to do one of the best activity one more time. Yes, kids. So here we go. But before starting that, let us know what is photosynthesis first. So, kids, photosynthesis is the process by which plants turn water, sunlight, and carbon dioxide into oxygen and food. Yes, kids. A simple sugar called glucose. उनका जो food है उसे आप क्या कह सकते हैं? Sugar or starch or we can call it ग्लूकोज राइट किड्स। अब हमने सीखा दैट फोटोसिंथेसिस को करने के लिए प्लांट को इसको अप्लाई करने के लिए उसको प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट नीड्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, और विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स प्लांट्स मेक शुगर एंड ऑक्सीजन। अब रेस्पिरेशन जो है वो ठीक फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है। इन दिस शुगर एंड ऑक्सीजन दोनों मिलके they gives out water, carbon dioxide and gives energy. Yes, kids. Now, kids, what do you think? Is it true that the plants get rid of all the oxygen they produce during photosynthesis? Well, the answer is they do not. Yes, kids. Plants actually hold on to a small amount of oxygen they produced in photosynthesis, yes, and use that oxygen to break down carbohydrates to give them energy. Yes, kids. अब आप सोचेंगे ये carbohydrates क्या हैं? Yes, kids. So carbohydrates are formed by green plants from carbon dioxide and water during the process of photosynthesis. Understand, kids? So, kids, as you know that we all are living being, right? Even though plants and animals too, right? So plants release oxygen during the day in the presence of natural light through the process of photosynthesis, right, kids? While at the night, the plants uptake oxygen and release carbon dioxide, which is called respiration. Yes, kids. जैसे आपको सांस लेने के लिए नोज की जरूरत है, राइट? और सेम एनिमल्स को भी है. इन द सेम वे प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं. आपको पता है कैसे? डू यू नो हाउ? यस, उनका जो नोज है दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. सो किड्स, स्टोमेटा इज द नोज ऑफ द प्लांट विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. बट why we can't see them with our eyes? Yes, kids, because they are very tiny pores which cannot be seen with our naked eyes. Yes, we can use an instrument. हम एक instrument का use करते हैं इनको देखने के लिए. That is called microscope. Yes, kids, to see the stomata. We can see the stomata with the help of this instrument. So, kids, the stomata are a tiny pores or holes which are present on the surface of the leaves, which helps the plant to exchange gases with the atmosphere. There are about 300 stomata per square millimeter. Yes, देखा एक leaf में कितने सारे stomata present हैं, right, kids? Now, as we know that ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो leaf का लोअर पार्ट है. सो जो ये लोअर पार्ट आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं. यस किड, एज कंपेयर टू इट्स अपर पार्ट के कंपैरिजन में लीफ के लोअर पार्ट में ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं. रिमेंबर दैट. ओके, लुक, यू कैन सी हियर how stomata look under microscope. Yes, kids. Here you can see number of stomata on the leaf. आप देखेंगे आप लीफ के ऊपर में बहुत सारे आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं, राइट? यू कैन सी देम इफ यू यूज योर माइक्रोस्कोप. अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे कोई भी लीफ को रखेंगे then you can see all these stomata over there, right, kids? Now let's take a single stomata over here. एक single stomata को लेते हैं. Let's learn something about this stomata. So this is called guard cell. इसे हम कहते हैं stomata का guard cell. This orange part inside this guard cell, this is called nucleus. इसे हम कहते हैं nucleus, which is inside the guard cell. There are multiple chloroplasts. इसमें आप देखेंगे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई देंगे. यस किड्स, एज यू कैन सी दैट दिस इज द इनर वॉल. ये आपका जो गार्ड सेल है इनका इनर वॉल है एंड दिस इज द आउटर वॉल. सो इफ यू सी इट प्रॉपरली, अगर आप इसको ठीक से देखते हैं तो यू विल नोटिस दैट द आउटर वॉल इज थिनर. जो बाहर की वॉल है वो थिनर है एज कंपेयर टू इनर वॉल, राइट? द इनर वॉल इज थिकर.
राइट किड्स? जो अंदर की वॉल है वो काफी थिक है एज कंपेयर टू आउटर वॉल. So kids, between these two guard cells, there is stomatopore. Yes kids, इस टाइम जो stomatopore है वो open है. आपको दिखाई दे रहा होगा. It's open in this picture. Whereas in this picture, the stomata is closed. So kids, now it's time to do experiment. Our experiment name is stomata experiment, and here we will learn how do plants breathe to give out oxygen. So kids, as you can see here, I have two transparent glasses, right? In one glass, I have filled hot water. In another glass, I have filled cold water, right kids? Now, आप देखेंगे I have two leaves I have over here. मेरे पास दो leaves हैं. This is called the upper surface and this is called the अंडर सरफेस. अंडरस्टैंड? ये अपर सरफेस है आपकी लीफ का, ये अंडर सरफेस है आपकी लीफ का, राइट? सो द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ यूजुअली हैज मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा to prevent loss of water in plants through transpiration. Yes kids, आपको समझ में आया? जो अंडर सरफेस होता है लीफ का, इसमें ज़्यादा अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं और वो प्रिवेंट करते हैं loss of water को. Understand? Now, as compared to upper parts, आप अगर इसको इसके ऊपर के upper part के साथ compare करते हैं, it gets more shade as compared to the upper surface. Upper surface से ज़्यादा shades आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं, right? So kids, now let's take our first leaf and let's put this leaf inside this cold water. इस ठंडे पानी में हमने इस leaf को put कर दिया है. You can see that the leaf emerged in the cold water in the glass, right? You can see there is no emergence of bubbles over here, right kids? आपको यहाँ पर कोई bubbles नहीं दिखाई दे रहे होंगे because जैसे ही हमने इसको leaf को cold water में डाला, यहाँ कोई bubbles नजर नहीं आए. Now let's move towards our hot glass. Now I'm putting this leaf inside this hot glass. You can see that the air inside the leaf will expand when heated. Extra amount of air is pushed out of the stomata. But here in this cold water glass, you can't see any, still you can't see any kind of bubbles emerging from this leaf. But here you can see small bubbles here. Can you see this? Yes, kids. In the hot water, you observe some bubbles emerging from the leaf. Bubble represents a gas in a liquid. Yes, kids. ये represent कर रहे हैं कि liquid में gas है. Yes, kids. Oxygen is released as the byproduct of photosynthesis during daytime. Understand? So, the plants breathe through stomata to give out oxygen during photosynthesis. Kids, here we can able to see these bubbles because right now the stomata pores are open. Yes kids, that's why the air is pushed out from the stomata. But the leaf which we have put in cold water, stomata is closed, as in the cold temperature water does not expand the air in the leaf. Understand kids? So kids, now we can say that plants breathe through stomata to give out oxygen during photosynthesis. Hope you all understood. So thank you very much for watching. Have a nice day.